The senior most brother Enrique. Om Shanti. It's really a pleasure to be here and be able to share with all the family here in Bharat. अभी तो बस अपना आने की खुशी जता रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे और अपनी एक्सपीरियंस एंड अनुभव शेयर करना चाहते हैं आकर. In the last few times that I go to Madhuban, before I always want to visit a part of India so that I can meet my sisters and brothers. पहले मधुबन होकर आते हैं, उसके बाद ये इधर और सिटीज में घूमते हैं ताकि अपने ब्रदर सिस्टर्स औरों को भी ये मिल सके. Because all of us will have to go to Golden Age, so first we have to meet each other at least once. क्योंकि हम सब ने गोल्डन एज में जाना है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को मिले पहले. So I'm based in Madrid, capital of Spain, and I'm in Guyana since 1986. Madrid, capital of Spain. Okay, yeah, he is from ये स्पेन से है, मैड्रिड जो सिटी है. ये ना बोला ऐसे बोलो मैं मैड्रिड से हूँ. मैड्रिड से हूँ. तो you have been in Guyana since 1986. 86 से Guyana 1986 से ये Guyana में चल रहे हैं. And I live in the center in Madrid, main center. There is only one. मैड्रिड में जो सेंटर है, ब्रह्म कुमारी का सेंटर, ये वहीं पे रहते हैं और वहाँ पे एक ही सेंटर है. And I live with my Logic brother, who is also in Guyana, and we are two brothers living there. और ये अपने सगे भाई के साथ वहीं पे रह रहे हैं. And we took knowledge in Barcelona, which is the main center in Spain, Barcelona. बार्सिलोना जो स्पेन का मेन सेंटर है, इन्होंने वहाँ से अपनी ट्रेनिंग ली है ब्रह्म कुमारी की. And और उसके बाद ये मैड्रिड में रह रहे हैं. Then I went to open a center in the south of Spain, Seville, and I stayed there for 16 years, and we opened different centers around the area. How many centers are there? Now it's around 12 centers in all Spain. You have 14 centers here only in the city, no? Not 14, actually we have 26 centers. Oh, Some centers. near surroundings. Okay. After 2 kilometers, after 2 kilometers. फिर ये साउथ स्पेन गए, उन्होंने वहाँ पे जाकर मतलब 16 साल रहे एंड उन्होंने काफी सेंटर्स खुलवाने में मदद करी है. And it's a very different experience there than here, because here you see the class is full, and there now after COVID has changed a lot, and the souls stay at home and connect online. कहते काफी फर्क है वहाँ की क्लासेस से और यहाँ की क्लासेस से, बिकॉज जब से कोविड हुआ है जो जितने भी आत्माएं हैं वो घर से रह के ऑनलाइन पढ़ना सीखना चाहती हैं. जैसे इतने सारी क्लास भरी हुई है ऐसे वहाँ पे नहीं है. So sometimes I read them only to my brother. No one there. Literally no one there, only my brother. And the camera is there. And in the camera there are 30 souls. 25, 30, 35, sometimes 40. But I have to change my mind, because before there were here, now there is nobody. तो कहते हम क्लास में सिर्फ कई बार तो हम 2 जाने होते हैं, मैं और मेरा भाई और कैमरा, और कैमरे में 30-40 लोग नजर आ रहे होते हैं. बट ऐसी सिचुएशन हो चुकी है अब तो. And so, and the last 3 days before coming here, we receive a message from the owners, because the center is rented, and they put the price higher. So it was too much, because it was already very high, but then it was too much, and then we think, well, we have to change center, no? आने से 3 दिन पहले बेसिकली उनको फिर ये अब मैसेज मिला है, जो सा इनका सेंटर है उसका जो रेंट है वो बढ़ गया है. ये सेंटर इनका रेंट पे था, ऑलरेडी हाई रेंट पे था, लेकिन अब और भी बढ़ गया है. अब कह रहे हैं कि शायद हमें अपना सेंटर चेंज करना पड़े. बिल्डिंग का रेंट बढ़ाएगा, सेंटर तो फ्री में है. नहीं बिल्डिंग का सेंटर का ही बोलेंगे ना. And then the thought came, why not to buy a center? अच्छा. It's not easy, but why not? No? So the thought was there. We shared the thought with the team in Spain, no, the coordinators team, and then we looked for a place
And in Madrid, it's very difficult to find a house, very difficult, and very expensive. But then in 3 days, Baba's magic, we find a house. It was wonderful, perfect. Price was very cheap. And we arrived at the right moment, and we signed the house in the evening. So before coming here, we bought the house. तो 3 दिन आने से पहले इनको क्या हुआ कि घर वहाँ पे कहते बहुत महंगे होते हैं, काफी महंगे होते हैं, मिलना भी मुश्किल होता है, बट फिर भी इनको पता नहीं कैसे जैसे जादू होता है, घर एक मिला, सस्ता भी मिला, और इनको आने से पहले पेपर शाम को साइन करके ये आए हैं. So it was really Baba's magic, because logic was impossible. But then happened, and I saw that there was a house, and the decision has to take very quickly. Then I thought, well, maybe the rest of the team will say, oh, don't go so quickly, no? But no, everyone was saying, yes, 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 yes. We phoned even Sister Genti here, yes, 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 everything was yes. Say, wow, Baba is moving everything, no? So in a few hours, less than 24 hours, we connect with India, with different parts of Spain, connection and communication was very quick, and happened. And then I leave to India, and I'm here. तो इन्होंने फिर सब अपनी टीम से भी बहुत सहारा मिला, उनकी टीम से उन्होंने पूछा, टीम ने सबने हाँ हाँ के बोला, यस यस ले लो, जैसे जयंती दीदी से भी बात करी और भी कई लोगों से बात करी, सबने यस यस बोला, और उससे क्या हो गया, इनको अपना सेंटर अपना मिल गया. What was the cheap cost? And at a cheap cost, सस्ते में मिल गया. How much? Yes. It's, I don't know for here in India, no, but for Madrid it's very cheap. It's a house fourth floor, no, with a garden also. And in the city, not outside the city, in the city. And the price is 650,000 euros. 650,000 €650,000, I think 8 euros 100 rupees के बराबर है. तो कैलकुलेट कर लो कितना. 8 rupees is 87 rupees, 1 euro. Okay, 1 euro is equal to 87, and then. So the one we put in mathematics. 50 लाख रुपए के दे. बस 50 लाख मिल गए. नहीं 650,000. Yes. 650. ये करोड़ में जाता है. नहीं 650,000 तो 6,50,000 में है. 6 लाख, हाँ 6,50,000, 6,50,000 यूरो. कैलकुलेटर कर लो. तो रफली 100 से गुना करके अपने आप थोड़ा सा. 65,000 गुना. So it's a lot or not a lot? It's a lot for India, no? So do you have lift in that 6 floor करोड़ का. building? No. 5 करोड़ का. But usually a house like this, usually it's at least 1 million euros, at least. So 600, it was really. But Spain is. What they are saying कि मिलना चाहिए था 10 लाख का, मिल गया 66,000 में. एक सेकंड नहीं 66,000 में मिला. उसको 100 से गुना 66 लाख बनते हैं. इनके हिसाब से 10 लाख में मिलना चाहिए था, मिल गया 66,000 में. मतलब इतना सस्ता बाबा ने पहले करा दिया. नहीं 66,000 नहीं बोल रही है, 650,000 बोल रहे हैं. Actually, what's the cost once again? Excuse me, brother. It is 10 times lesser. You got. चलो प्रॉपर्टी का भी दिखाओ. इंक्वायरी शुरू हो गई. Price is almost 1 million. Usually it's at least 1 million, And yes. you have gotten 65,000 only. Yes. It is almost. No, not 65,000, 650,000. 660,000. मैं वही बार बोली 650,000. Not 6,500 would be. कोई बात नहीं. I buy it in 1 second. It is 6 lakh rupees. हाँ 6,50,000 समझता है तो इसलिए 650,000 बोला इन्होंने. जी 5 करोड़ का. इन्हें तो सेट है. Well, and चंडीगढ़ ही now, है. as you know, a lot of work to do and things, but it's wonderful to have a new place and new energy, and it's a good part of the city also, because there's a lot of people and very populated, so we think that more people will come. And my feeling is that someone is calling us, because we were in the north of the city, big city, no? Madrid is the biggest city in Spain.
we were in the north and never we have been in the south. So now we are in the south. So I felt that someone was calling us, no? Come. तो पहले ये नॉर्थ में थे, अब साउथ में आ गए हैं और इनको ऐसा फीलिंग उठती थी जैसे हमें बुलाया जा रहा है वहाँ पे, और वहाँ पे बुला के मतलब कि इनको कहते हैं हम अभी नई एनर्जी से बड़ा अच्छा लग रहा है, नया घर, नया काम, और मतलब कि हर नए सिरे से सब कुछ सेट करेंगे. सो ही इज फीलिंग काफी खुश है इसको लेकर. And I started Gyan in August '86, and 6 months later I went to Madhuban for the first time in March '87, and I had a personal meeting with Bagdada, and it was really very good experience. And I was sitting there very nervous, no? And Baba was giving me. Both of the brothers are Kumar. No, I was married before Gyan. I was divorced before Gyan. तो एक्चुअली ये शादीशुदा थे ज्ञान से पहले, फिर डाइवोर्स भी हो गया था ज्ञान से पहले. अब वो कहते हैं कि जब 1986 में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर ये 6 महीने बाद आके बाबा से मिले और काफी नर्वस थे जब उनको मिलने आए. बहुत अच्छा भी लग रहा है. I have a daughter, and she is now 44, and I have 2 grandchildren. One is 16 and the other is 13. बेटी है इनकी 44 इयर्स की, और एक 2 बच्चे हैं उसके, एक 16 साल की और एक 16 and one is 12. 12 है, एक 12 साल की. And they come every year at least once for a retreat with me in Madrid, all the family. This is our deal. At least once a year you come for a retreat. So they come and they stay with me and they listen to knowledge a little bit, and so they are very close. साल में एक बार ये इनके पास आते हैं मैड्रिड में. इन्होंने बनाया हुआ ये सिस्टम. आपने एक बार साल में मेरे पास जरूर सारी फैमिली आती है, कहते हैं बहुत अच्छा लगता है. रिट्रीट करती है वहाँ, बाबा के कांटेक्ट में है. हाँ, वो भी बाबा के कांटेक्ट में है सारी फैमिली. When I started in Gyan, I was living with my daughter because her mother was mentally not well. So I start to go after taking the course. I start to go to the Murli, and she came with me because I could not live alone at home. So she was 7, so we went both together in the Murli every day. मुरली सुनने मतलब कि बेटी साथ ही जाती थी, क्योंकि जो इनकी वाइफ थी उनकी मतलब कि मेंटली ठीक नहीं थी. वो मदर मतलब कि मेंटली नहीं थी, एक्चुअली बच्चे का केयर नहीं कर पा रही थी. तो वो जो बच्ची थी वो इनके साथ ही मुरली सुनने डेली जाती थी. And then she went back with her mother after 1 year, but she was very close. She met all the daddies. Daddy Janki knew her very well, and I want to share an experience with Daddy Janki. It was very funny. When she was living with me, Daddy came many times to Spain. Sometimes 3 times per year, 4 times. So we were very close. So one day she came to Barcelona. I was there. She was giving Dristi, giving Tori and Dristi. And then I went with my daughter, and my daughter took me like this, and I thought, oh, Daddy Janki will feel that she's attached to me, so much attached. I said, oh. So I went there to take Tori, and then Daddy Janki looked at my daughter and she said, you are attached to your father. And I said, oh no. वो कहते हैं कि जो दादी जानकी है साल में 3-4 बार जरूर आती थी स्पेन में. तो ये काफी क्लोज हैं दादी जानकी से. तो जो बेटी है इनको बहुत प्यार करती थी. जब एक बार दादी जानकी आई थी तो ये इनको चिपक गई, तो इनको डर लग रहा था. वो कहेंगे तुम इतने मतलब कि वो तुम्हारे साथ इतनी चिपकी हुई है. वो कहते जब मैं टोली लेने गया वो कहने लगे कि तुम इतना अपने पापा को प्यार करती हो. दादी जानकी ने वो बेटी को बोला. And I thought, what will Daddy Janki think about me? My daughter so attached. And then Daddy Janki कह रहे हैं कि वो समझते क्या सोचेगी, मुझे मेरे बारे में क्या सोचेगी. वो इतनी अटैचमेंट है इसकी बेटी से, और दादी जानकी इतने समझदार है, इन्होंने उनको नहीं कहा, बेटी को कहा कि तू अटैच है अपने पापा से. But then suddenly Daddy Janki looked at my daughter and she said, yes, you become very attached to your father. I said, what is this? उन्होंने फिर बेटी को बोला कि तुम बहुत ज्यादा अटैच अपनी पापा से.
तो मतलब कि then he was bit what, बेटी थोड़ी सी ऐसे होगी कि कैसे बोल रहे हैं. And then she said, when you remember your father, you will remember Baba. वे दादी जानकी ने उसको बेटी को समझाया, जब भी तुम अपने पापा की याद करोगे तो बाबा को याद करना है, बाबा ऑटोमेटिकली याद में आएंगे. And years later, I asked my daughter, do you remember something about Brahmin life? And she said, when I remember you, I remember all these things. So Dadi Janki was so clever, huh? तो इन्होंने बेटी से बात करी, तुम्हें कुछ याद आता है कभी कोई ऐसी बात? तो कहती हाँ, मेरे को दादी जानकी की वो बात याद आती कि जब भी मैं इनको याद करूंगी मेरे को बाकी बाबा सारे अपने आप याद आ जाते हैं. वो बात मैं कभी नहीं भूल सकती. And my meeting, personal meeting with Baba, I was, in my mind I was saying, my Baba, my Baba, my Baba. Because I was nervous, so I took a thought and repeated, no, my Baba. And then I sat in front of Baba and Baba gave me drishti and she said, do you have the experience that the father is my Baba? So it's like, he took my thought and he gave me back the thought. No? तो हमेशा ऐसे ये याद करते थे, माई बाबा, मेरा बाबा करके उनसे दृष्टि मिलती थी, जैसे उनको ऐसे अनुभव होता था कि उनसे पूरी दृष्टि मिल रही है. And then he said, you are easy yogi and Toli Om Shanti. And I was really like beyond, no? I went then for dinner because at that time it was so long, no, that we went for dinner and come back and so. And another friend of me, he said after that he was talking to me in dinner, but I was not listening anything. And he was trying to talk to me and I was not seeing anybody, just be there and still the words, no? पहली My बार Baba, बाप my दादा Baba, मिलन my का Baba. एक्सपीरियंस. हाँ, ये बेसिकली अपने बाप दादा का पहली बार का एक्सपीरियंस बता रहे कि इतना अच्छा अनुभव था, मतलब किसी और ही दुनिया में खोए हुए थे. उसके बाद ये डिनर पे गए, वहाँ पे कोई और बंदा इनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, बट ये इतने और ही ध्यान में थे, मतलब वो एक्सपीरियंस को भूलना नहीं चाहते थे, उसी एक्सपीरियंस में खोए हुए थे. And the next year I had another meeting with Bap Dada and he talks about self-sovereignty and still I'm working on that. But at the end I like very much what he said. He looked at me, he gave me Toli and he said, you are good and you have good faith. अगले दिन फिर इनको मौका मिला बाप दादा से अगले साल नेक्स्ट ईयर यू मेट नेक्स्ट ईयर अगेन, मतलब कि दोबारा से इनको मौका मिला बाप दादा से मिलने का. फिर इनको फिर से दृष्टि मिली और उन्होंने बोला आप बहुत अच्छे हो, आपको बहुत विश्वास है परमात्मा पे, निश्चय अच्छा है आपका. And I think this is the speciality that Baba has given me as a blessing, that many things has happened during these 35 years or 36, but faith that, well, I have to move forward and things will go, no? So I think faith is a speciality that Baba has given me. And also Daddy Janki, this finger, and she always was saying, don't stop, don't stop, don't stop. Okay, this finger is there. और बहुत सारी ब्लेसिंग्स इनको बाबा से, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के कारण ही आज वो कहते मैं यहाँ ऊंचाइयों तक पहुँचा हूँ. इतने साल हो गए, 35-36 ईयर्स, तब से मैं इस काम में लगा हुआ हूँ उनकी, क्योंकि ब्लेसिंग्स के कारण. वो दादी जानकी की वो उंगली इसी रास्ते पे रहना, हिलना मत, यहाँ से टस से मत होना. Om Shanti. ओम शांति.